my respect leader, Tarun Bijoy, asked me to narrate incidents that are happening in Portland Regional Council. I'll try to give you the exact incidents, how and why it happened, and what may be the outcome or what may be the future from my experience at this age, the information that we have got in our life. I am Deputy Chair of Portland Regional Council, and I think many of us who are here might not be knowing about Portland Regional Council. Portland Regional Council was formed in 2003, and it was created under the provision of 6th Schedule of Indian Constitution. The objective of the council is to protect the rights and privileges of tribal people while protecting the rights and privilege of non-tribal people. Who are Bodos? Sometimes people try to say Bodos are known for violence. I have to face some of people who want to visit our area during this violence time, and they ask me that why it is happening in Portland area. The violence that took place in Portland, please try to understand, this is not the problem of Portland. This is the problem of entire Assam. This is the problem of entire Northeast. Rather, this is the problem of our Indian nation. The infiltration problem is not of today. It started much before the independence. The information of infiltration in Assam and other states in the Northeast. Earlier it was only Assam. It was bifurcated into 7 states. That's why now we are talking only about the present Assam portion. No. The infiltration is taking place in entire 7 states in the Northeast. This information is available in many books, even the book written by the governor of Assam, who served as from most probably from 1963 to 74, led B.K. Nehru, who wrote a book, Nice Guys Finish Second. He has very vividly given how infiltration is taking place and who are encouraging this infiltration and why, knowing very well that large number of infiltration every day taking place, Indian policy and Indian polity could not stop it. The chairperson of this discussion, our respected S.K. Sinha, has given a very vivid picture of how infiltration is still going on and what should be the remedy to be taken by the government of India or by the Indian thinkers, the planners or Indian people to stop it. There is a very big literature in future. The scholars, the students, or our Indian children should know a lot of things from this book. So I don't want to go back
how the infiltration is taking place. Bodoland is 9,000 square kilometer. Bodo people demanded separate state of Bodoland. But why? It was in early days, before the British came in that area, out of Bhutan. It was taken under the British Empire in 1864 under the agreement of Chansula, which took place between the Bhutan king and the British Viceroy, who ruled entire Northeast, including present Bangladesh, from Kolkata. This is forgotten story, and I request every one of you to keep it aside from what we are going to discuss today. Now, the tug of war to stop the infiltration from erstwhile East Pakistan to the areas of present Northeast was a big task. The leaders of Assam, right from Gopinath Bodolin, many chief ministers, Congress leaders of the tribe, tried to stop it because they discussed with the National Congress leaders here in Delhi and everywhere before the independence. But in the process, the Congress leaders of the time could not sustain the campaign done by other group, that is Muslim group, Jinnah. He could succeed in his ambition to include entire Northeast in the erstwhile East Pakistan. Later, these are known to you. Now in Bodoland, what is happening? Right from the day when Government of India decided to create Bodoland Territorial Council, when the Government of Assam supported it, entire indigenous people of Assam supported it, entire political parties, non-political parties, NGOs, writers, thinkers supported it. Some people came out protesting. Bodoland should not be created under the sixth schedule. Who were they? They were the same people who are creating problem. This kind of unwanted incidents, violence now. They formed recently Ona Bodo Suraksha Samiti. Just Bodo and Ona Bodo, trying to take everybody's help who are not from Bodo community together. And they demanded for scrapping the Bodoland Territorial Council and lifting of the reserve seats for the tribals. We have only one parliamentary seat, and it was made to be reserved seat for the tribals at the time of applying the government of India or the people of India when they started the democratic system in the country. So they want to leave it. So this kind of contradictions were there. Now, we are very happy to have Honorable Nitin Gadkari ji, the National President of the Bharatiya Janata Party. आज एनडीए की मीटिंग थी और सभी उस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठकों से भी आप समय निकाल के केवल इस बोडो समस्या पे चर्चा सुनने के लिए वह बैठक छोड़ के यहाँ पे आए हैं। हम सब आपके हार्दिक कृतज्ञ हैं और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कहता हूँ कि साहित्य देकर उनका सम्मान करें। आदरणीय गडकरी जी, हम लोग अपने कार्यक्रम में चूंकि चुनौतियां और संकट झेल रहे देश का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम फूलों के गुलदस्ते नहीं बल्कि अग्निधर्मा साहित्य प्रदान कर अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करते हैं। जोर से उनका स्वागत करते हैं। माननीय गडकरी जी, हमको बहुत हमारा सौभाग्य है कि पूरे बोडोलैंड की जो महत्वपूर्ण लीडरशिप है आज यहाँ उपस्थित, विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच श्री सर्बानंद सोनोवाल जी वहाँ पे पूर्व सांसद और असम के
माननीय स्वपन दास गुप्ता जी, माननीय जनरल सिन्हा साहब, और आपके दाईं ओर माननीय विष्णु मुखियारी जी जो लोकसभा के माननीय सांसद हैं, वहाँ के महत्वपूर्ण नेता हैं, माननीय विश्वजीत दानोरी जी, आप राज्यसभा के सदस्य और बोडोलैंड के नेता हैं। और अभी हमने प्रतिभा ब्रह्मा जी से सुना कि किस प्रकार वहाँ महिलाओं पे भीषण अत्याचार होते हैं और लोगों की आंखों में आंसू थे, ऐसा कारुणिक दृश्य उन्होंने उपस्थित किया। माननीय काम्पा बोरगोहेन इज द डिप्यूटी चीफ of the Bodoland Territorial Council. He has especially come for this evening's seminar, and he is narrating the atrocities and the kind of attacks and the background on the Bodo's problems and agony. Company. I don't want to prolong because the discussion needs to come to certain points where we need to give more emphasis. Just when the Bodoland Territorial Council was created and limited power was given, delegated to the council authority after getting elected, they try to stop the infiltration. Land alienation is the biggest problem, and then multiplying of population is another big problem. So what happened when we stopped this infiltrating people from grabbing land, from occupying land, forest land, government land, any vacant land, unused land, then started every kind of hue and cry. They said we have lost land right after creation of the Bodoland Territorial Council. We have lost our political right after creation of Bodoland Territorial Council. Now, why they have said it? Earlier, before creation of the council, they used to come. They used to take any land which is like grassland, wasteland, and then proposed forest land, etc., etc. So these were the basic problems. I need to give more detail, but I think today there are national leaders are there. They have to share a lot of problems. And which they know better than us what policy are there with the government of India and what kind of policy we could maintain before and the things. Why were you attacked? So now, why we were attacked or we are being attacked? This is, Bodoland Territorial Council is adjacent to a district which is the main gateway from Bangladesh to Assam. This is called Dhuri district. And Bodoland Territorial Council is bordering with Dhuri district. So those were the only people who stopped them from entering more and more in the interior area. On the north side, we border Bhutan. And they always try to reach the border. So we did not have any weapon to stop them earlier. And the government of Assam, irrespective of party, they were so careless, and like sometimes they were kept or treated as a vote bank, etc., etc. And some people even mobilized that we have to increase food material, and unless if they are brought, then we can increase food material. Because the natives are not working, kind of thing. Anyway, so their intention is today the Dhuri district and many districts in Assam, especially I'll give you, and you can see the latest population census 2011. The population in Dhuri district is having 94% of Muslim population today. And you see the stages of 1951, 1961, 1971. Forget about later stage. Just see the 1971 census figure. How much was there? And today, how much is there? So
These are the factors. They want to push the native people more and more in the northern side and grab the land entirely in the south. And when they want to become 100%, when we Indians just sleep, talking big and doing nothing, then they will declare that it is not a part of India, it is part of Bangladesh. This, I think, they will not meet long term. 1 decade or 2 decades will be enough for them to declare it as the part of Bangladesh. So, there are some immediate causes of present violence. After forming this Ona Bodo Suraksha Samiti, they started campaign just to isolate the Bodo people. You know, Bodoland area is insurgency infested area. There are armed groups among Bodos. NDP is there, very well known. Alpha is there, everywhere in entire Assam, including our area. There are armed groups among the Adivasis. Adivasis means Santalis, Uraons, Ho, Karias. They are called Adivasis in our area. But they are not Adivasi. They are not having the tribal status. So they are also having Khoga militant force, Biswa militant force, etc. etc. Then we have Kamtapur Liberation Organization, KLO, among the Rajbanshis. Then we have armed organization among the Muslims themselves, Malta, Muslims United Liberation, Tiger, Malta, MULTA. And recently, on 15th of June, they declared another armed organization called UNNA, United Muslim National Army. And they demanded Muslim land comprising 14 districts, including some parts of Bodoland. So, what happened later? On 25th of July, one Rajbangshi teacher was served extortion note, and then he contacted the police, and the police planned to apprehend the extortionist. Later, what happened? The communication took place, and they were called to collect the money, and the police kept ambushing. Then they came, and the police shot them dead. The extortion note was given in the name of NDP, which happens to be Bodo organization. But later, when the dead body appears, they were Muslim boys, and they are nothing. They were the activists of ABMSU. Now, what is ABMSU? ABMSU was formed some 2 years back. There's an old Bodoland Muslim Students Union, ABMSU. It is a part of Shimi, and Shimi was going to be banned in India. Going back in Assam, they formed AMSU, All Assam Students Union. And in Bodoland, they again formed ABMSU, part of that AMSU, and AMSU is part of Shimi. So, this kind of serial incidents took place. On 30th June, some miscreants shot at one Muslim laborer and wounded another. Then these organizations called BON, they burned vehicles and all, shops, gutted to fire. Then the injured person declared, confessed to the police, it was not done by the Bodos. They immediately blamed the Bodos. Then the injured person himself said to the police that it was not done by the Bodos, it was done by some Santali boys. And he named also XYZ this in, and they were later apprehended. Then another incident happened on 6th July. 2 persons were killed, and immediately Bodos were blamed. But later police, after investigation, found that it was handiwork of KLO, and they could apprehend 2 persons from KLO organization. So after that, another incident at Kokazar. Now in many medias,
even in the national magazines and all, I have seen that two Muslims were killed. They were not killed. They were injured. Two persons injured. Underneath, two persons injured, and only one bullet was used. Only bullet was used. One bullet was used. It went through and then hit another person's leg. So they are in the hospital still. And it so happened, these organizations, the Muslim people, they just blame the Bodos, called bombs did everything. Then again, on 20th, next day, they killed 4 Bodo youths just nearby the Kokaza town. After that, everybody, irrespective of community, Bodo, Muslim, Adivasi, Rajbangshi, everybody came out next day and cremated the dead body. Again at night, suspecting that Bodos will now retaliate, they in advance in Dubi district attacked the Bodo village. After that, the violence spread everywhere. So I have spoken along, ladies and gentlemen. I thank you so much for hearing what I have said. This was the some of the incidents and causes of the incidents. Thank you so much. Thank you, Janata ji. विदेशी घुसपैठियों को रोकने के अपराध में इनको जलाया, मारा और उध्वस्त किया गया। इस बारे में हमें और विशेष जानकारी देंगे हमारे माननीय संसद सदस्य राज्यसभा श्री विश्वजीत डैंगुली। सम्मानीय फॉर्मर गवर्नर ऑफ असम लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा जी और हमारी बीजेपी की अध्यक्ष श्रीमान गडकरी जी और यहाँ इस डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से इस प्रोग्राम को जो अरेंज किया है हमारे सम्मानीय तरुण विजय जी, सांसद वैष्णवी जी, बदल का विदुषित कांता बरगियारी जी और आज के अतिथि सर्वानंद सोनोवाल जी, दासगुप्ता जी और यहाँ उपस्थित हुए हमारे सांसदगण और विशिष्ट व्यक्तिगण और मेरे दोस्तों और मीडिया पर्सन्स, सारी बातें हमारे कांपा जी ने बता चुके हैं कि किस तरह का हालत वहां पर हो रहा है, आगे कैसा था, अभी क्या है और वर्तमान क्या हो रहा है। हमारा सांसद कुंदर वैष्णवी जी भी हैं, वो भी बताएंगे। तो सिर्फ वहां का जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, हमारे देश के लिए है, इसका शायद आज सब महसूस कर चुका है। और इस हालत के लिए हमको क्या करना है इस विषय पर शायद आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ विचार करके कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। कांपा जी ऑलरेडी बता चुके हैं कि आज बॉर्डर के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है इसका मूल कारण है कि बांग्लादेश से आसानी से, ताकि आसाम या नॉर्थ ईस्ट में वो लोग कब्जा कर सके, वो लोग आ सके, यही मूल कारण है। क्योंकि वहां बोडो लोग थोड़ा वॉल की तरह काम कर रहा है, बेरा वॉल हो रहा है, तो अगर इस वॉल को तोड़ सकेगा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही मूल समस्या है। और आज इसके कारण वो लोग प्री प्लान क्या है, इसके लिए कम समय के अंदर वो लोग अप टू इंटरनेशनल लेवल तक ये हाईलाइट किया कि वहां मुस्लिम लोगों को बोडो लोगों ने मारकर भगा दिया है। बहुत हजारों लोगों को मार डाला, बहुत को रेप किया, सारे घर जला दिया और बदलों इलाका से दूसरी जगह पर भगा दिया। ये नॉट ओनली इंडिया, बाहर भी वो लोग इसको
पूरा प्रसार किया, ताकि भारत का जो ये है हमारा क्या है सम्मान है वो ना रहे, हम बदनामी बन जाए, यही आस वो लोग कर रहा है। तो इसी से हमको पता चलता है कि ये फ्री प्लान है, क्योंकि आगे कोई ऐसी घटना होने से भी जहां पर हुई तो वहां पर ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार इसको लेके सारे मुस्लिम लोग वहां चला गया है। दिल्ली से भी उन लोगों का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स का, वो लोग सब चला गया खतरा। हम लोगों के साथ भी बात किया, भाई मुस्लिम लोग को क्यों ऐसा किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो देखा तो ये पूरा एक प्लान है और ऑर्गेनाइज फॉर्म से ये क्या है। तो जो भी हो, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि आज वहां के जो स्थानीय लोग हैं तो आज हम लोग बेघर होना पड़ रहा है। ये सबसे दुर्भाग्य है, अपने ही देश में, अपने ही गांव में, अपने ही जगह में। तो इसलिए मैं आज अनुरोध करूंगा इन सारी चीज को हम लोग सीरियसली लेना चाहिए देश की तरफ से। हमारे देश में ये प्रॉब्लम है कि हम सारे रीजन के विषय में हमको पता नहीं है। करण जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये यहाँ का होकर भी न इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उनका पता है कि वहां का कौन कौन सा समुदाय है, कौन जाति जनगोष्ठी कैसा किस हालत में है, वहां के बारे में उनको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। तो हमारे देश के बाकी मंत्री हो, कोई ऑफिसर्स हो, उनको ना सारी सीमा के बारे में पता है, ना वहां के लोगों के हाल चाल, गाँव के लोगों के क्या है जाति के बारे में, भाषा के बारे में, वहां की ऑर्थोनिटी, वहां के गांव की व्यवस्था, सारी बातों के ऊपर कोई ऐसे पता नहीं है। तो इसलिए कभी कभी इसको हैंडल करने में भी बहुत मुश्किल होता है देश से। लेकिन हम सब मिल के अगर इस समस्या को गंभीरता से लेके अगर थोड़ा सा हम विचार करेंगे तो जरूर हम देश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा और बनना नहीं चाहता हूं, बाकी तरुण जी खुद उधर गया है, वो ज्यादा अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकेगा। तो मैं चाहता हूं आज के इस डिस्कशन के जरिए हम लोगों को जरूर कुछ ना कुछ एडवाइस मिलेंगे और हम लोग सब देशवासी के हिसाब से इस देश को बचाने के लिए एकजुट होके जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट में ये स्ट्रेटेजी मैंने होते जा रहा है, इसके अगेंस्ट में हम लोग फाइट कर चलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। बोडो एरिया चिकन नेक पर है, वो जो छोटी सी नाजुक गर्दन है जो पूरे देश को पूर्वांचल से जोड़ती है, वहां एक जिस दिन बोडो परास्त हो गए या हार गए या खत्म हो गए, पूरे असम को खत्म करने में हमारे बोडो नेता ही बताते हैं 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। ये वो पराक्रमी भुजा है बोडो, जो बोडो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से हिंदुस्तान बचा रही है। अब इसके बारे में क्या स्थिति है और वहां की दुर्भाग्यजनक सामाजिक स्थिति क्या है जो बोडो को अकेला छोड़ रही है और देश को इस बारे में जानकारी नहीं होने दे रही है, हमारे पूर्व सांसद और असम के अत्यंत वरिष्ठ नेता श्री सर्बानंद सोनोवाल जी बताएंगे। The organizer of this meaningful event, Sri Tarun Vijayji, who represents Dr. Samaprasad Mukherjee Research Foundation, Delhi. We have the kind presence of National President, Bharatiya Janata Party, Sri Nitin Gadkari ji. We have the kind presence of
Lieutenant General S.K. Sinha, the former Governor of Assam and Jammu and Kashmir. We have also the presence of S.K. Basumatari, Honorable Member of Parliament Lok Sabha, who represents the district area Kokrajhar constituency, Assam. We have also the presence of Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Mrs. Daimariji. We have the presence of Kampa Vargwari, Deputy Chief of Bodoland Territorial Council, Kokrajhar. We have also the presence of renowned writer, columnist, Sri Sapan Dasgupta ji. And we have also the presence of Balbir Punji, Honorable Member of Parliament, and two Honorable Members of Lok Sabha who represent Assam, MP Rajan Gohaji and MP Ramin Bekaji, and respected ladies and gentlemen. First of all, we being an Indian, we all know the problem in details, because Bangladeshi problem is no more a problem among people of the country. So, Bangladesh, how it was created, who created this particular nation, we all know it. If we recollect 1971 Bangladesh war, then we know how Congress policy decision created this particular nation. Everybody that time thought we glorified that victory. Of course, we salute those Jawan who sacrificed their life for the cause of the country. But we never expected this particular small country will create a huge problem for the countrymen. We had to spend a sleepless night now in our own homeland. And as we, the people of Assam, sharing the 272-kilometer international border with Bangladesh, that is the biggest advantage for the Bangladeshi Muslim to invade Assam and Northeast. जब हमें 1979 में पता चला, चुनाव हुआ था, बिलाल पटवारी जी that time was a candidate. When there was an abnormal growth in the electoral roll, it was discovered, detected. Oh my God, how this increase become possible? That time the political sense became so alert for entire people of Assam. They got all assembled and started Assam movement under the leadership of all Assam Students Union and Assam Gana Sangram Parishad. As you know the background of that famous movement, in that movement, the national leaders, our icon, Atul Bihari Vajpayee ji, Advani ji, and our famous writer Henry Kamat, Arun Suri ji, Jaswant Singh ji, Jet Balini ji, all the big leaders from BJP platform went to Assam. Physically they had encouraged by their meaningful presence with the agitators, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने असम के लोगों को साथ दिया. This was the only political party in the country. During the crisis of Assam, they not only cooperated intellectually, politically, they extended lot of support. मैं अभी भी on the people of Assam आभारी हूं वाजपेयी जी का, अडवाणी जी का. तो 6 साल इस संग्राम चला, आप लोगों को मालूम है, जिसे इतिहास में असम आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है. और असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था, कांग्रेस सरकार ने 855 लोगों को हत्या किया था. The Congress government at the state and the center, they have killed
more than 855 लाइफ जिसे हम अमर शहीद के नाम से पुकारते हैं और हमारी श्रद्धांजलि देते हैं. They are the greatest, martyrs of Assam movement. कांग्रेस ने देशवासियों को हत्या किया. इसने हत्या किया था, इस देशवासियों ने देश को बचाने के लिए नारा लगाया था, आंदोलन किया था. यह है कांग्रेस सरकार का देश के लिए उनका कमिटमेंट, ये है उनका चरित्र. उनको उसी समय पेट्रियोटिक दृष्टिकोण से अगर इस समस्या को अगर एनालिस किया जाता तो शायद असम को हर एजिटेटर को सैल्यूटेड, बट इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग सैल्यूट उन्होंने उनको बुलेट के जरिए हत्या किया था. हम कभी नहीं भूलेंगे ये आघात. असम का कोई भी नहीं आदमी भूलेंगे. जो देश को चाहता है, इस मुल्क का हुकूमत हमेशा हिंदुस्तानियों को हाथ में होना चाहिए और नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी और देश का एकता, अखंडता और देश का जो सोवरेनिटी उसको जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए असम के लोगों ने संग्राम किया था. बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह आंदोलन किया था. 15 अगस्त लाल किला से सारे देशवासियों को यह आश्वासन दिया गया था ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस. राजीव जी दैट टाइम ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आपको चिंता करने का कोई बात नहीं, हमने समझौता कर लिया. आंसू का साथ समझौता लागू किया जाएगा. हर बांग्लादेशियों को आइडेंटिफिकेशन करके उनका नाम वोटर्स लिस्ट से निकाल के और उसको डिपोर्टेशन करके हमारा एकता अखंडता को हम जिंदा रखेंगे. दैट वाज द कमिटमेंट ऑफ कांग्रेस, द देन प्राइम मिनिस्टर, टू द कंट्रीमैन ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस. कुछ नहीं हुआ. अभी भी बॉर्डर खुला है. आउट ऑफ 272 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर, 50 किलोमीटर रिवर लाइन अभी भी खुला है और जो भी बनाया गया है बार्क वायर फेंसिंग से उतना पुअर क्वालिटी का है. अभी आप जाइए करीमगंज इन बराक वैली, देयर आर 2 वैलीज इन असम, ब्रह्मपुत्र वैली इन बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली डुबली में जाइए आप देखेंगे, नंगे आंखों से आप देखेंगे सारा बॉर्डर खुला है. नो रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं दिया गया है, जो जवान को वहां लगाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनको हमारे देश का, हमारे होम मिनिस्टर सिदम्बरम ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ असली बुलेट मत इस्तेमाल करो, रबर बुलेट इस्तेमाल करो. दैट वाज द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय आवर बीएसएफ जवान ऑन द बॉर्डर लाइन. दिस इज द ट्रेजेडी. इससे आप अंदाजा लगा सकता है कि कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कैसा उनका विचार है, किस दृष्टिकोण से बांग्लादेशी घुसपैठिया को वो देखते हैं. तो इसलिए ये बात साफ हो गया है. अभी जिस बोडोलैंड टेरिटरी में जो घटना हुआ है, ये घटना नई घटना नहीं है. इसका पहले भी 2-3 बार घटना हुआ है. दिस इज नॉट द फर्स्ट अटैक. बोस आर द वॉरियर कम्युनिटी since the time immemorial. तो लड़ाई करना सीखा है अपना बाप दादा जमीन रक्षा करने के लिए. इसलिए लड़ाई में उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को अपने कुर्बान किया है. तो भी अब हटेंगे नहीं, लड़ेंगे. लड़के अपने बाप दादा को जमीन का इज्जत है. तो इसलिए हमारे एक कमजोरियां है, ये हमारे देश का, इसलिए मैं बोल रहा हूं वापस का मामला है. वी मस्ट हैव द इंट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट. कमजोरिया ही है कि हमारे वहां वी हैव गॉट 30 मिलियन पॉपुलेशन ओनली. ऑल इंडियन कम्युनिटीज वी हैव साइजेबल नंबर इंडियन कम्युनिटी. लेकिन दुख की बात है इंडियन कम्युनिटी इकट्ठा नहीं हो रहा है. पिछले कई सालों में हम लोगों ने काफी कोशिश किया. असमिया, बंगाली, गुरखा, मारवाड़ी, बिहारी, पंजाबी सब अगर एक कथा हो जाए, कौन है बांग्लादेशी हमें डराने वाला? हमें उसे मुक्त कर जवाब दे सकते हैं. इसलिए हमारा देश के हर नेता के आगे एक बहुत बड़ा फर्ज है. आप सबको लाइए और हमारे जितना भी लोग हैं उनको एक कथा कीजिए. एक मजबूत इंडियन फैमिली, उसमें
I am taking much time. Sorry, Vijay, I don't want to embarrass you. But anyway, मुझे जो कहना था मैं कह दिया, आप लोगों को अभी समस्या मालूम हो ही गया है, तो इसलिए अगले दिनों में हमारा पास जो काम पड़ा हुआ है, कांग्रेस तो करेगा नहीं, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। असम का मेन सोसाइटी हमारे को कैसे सपोर्ट करेगा? हमारे असम का हर सोसाइटी जो भी है, राजवंशी है, हमारे ब्राह्मण है, होलनिया कसाई है, मदाई है, ब्राह्मण है, कलिता है, कायस्थ है, हमारे बंगाली है, भोजपुरी है, आदिवासी है, और असमिया जो मुसलमान है, मरवाड़ी है, सबको एक साथ मिलकर लड़ाई करना है, सबको। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे असमिया जो मुसलमान है, सदियों से लोग बसा हुआ है वहां, दे हैव बीन देयर सिंस 12th सेंचुरी, वो असमिया मुसलमान है, वो भी सरायघाट में लड़ाई के साथ लसित बरगुटर का साथ दिया है। हमारे सिन्हा जी को अच्छी तरह मालूम है, बिकॉज सिन्हा जी इस विषय पर काफी अध्ययन किया है। सो इसलिए असमिया मुसलमान का पास में भी हमारी यही दरखास्त है कि आप लोग भी खुल के अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि हमें एक साथ अभी खड़ा होना बहुत जरूरी है अगर देश को बचाना। इसलिए असम समझौता में जो वादा किया गया था, पहला तो हमारा बॉर्डर सील होना जरूरी है, सिर्फ बार्ब वायर फेंसिंग से नहीं, रोड भी सड़क भी बनाना पड़ेगा, बीएसएफ जवानों को भी उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ साथ में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो एक्स आर्मीमेन है उनके लिए वहां सेटलमेंट देके बॉर्डर को अच्छी तरह सुरक्षा करने के लिए ऐसा कदम उठाना बहुत जरूरी है। एक दूसरा है हमारे जो कमिटमेंट था असम कोर्ट में, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम में इतना बांग्लादेशी घुसपैठिया है, कौन कहां से कैसे डॉक्यूमेंट अरेंज किया है किसी को पता नहीं, कोई ऑफिशियल के पास डॉक्यूमेंट नहीं। इसलिए वंस फॉर ऑल जो भी इंडियन गवर्नमेंट आईडी सिटीजन है उनके नाम को लेकर एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने 2005 में वादा किया था 2 साल में कंप्लीट करने का, आज तक नहीं किया। इसलिए नहीं किया, अगर वो कंप्लीट कर दिया तो बांग्लादेशी घुसपैठिया कांग्रेस का वोट बैंक नहीं रहेगा। तो कांग्रेस का एक ही मकसद है, बार बार सत्ता में रहना है और बांग्लादेशियों को जमीन देकर उनको सही सुरक्षित रखना है। इसलिए बड़े लोगों को काफी नुकसान किया है, सिर्फ बोरो का नुकसान नहीं है, ये हर एक बड़ा असमीज फैमिली का नुकसान है। बोरो इज नॉट द आइसोलेटेड ग्रुप, बोरो इज द ओरिजिनल इंडिजिनस ट्राइब ऑफ असम। तो इसलिए हर असमीज कम्युनिटी, अभी दिस इज द नीड ऑफ द आवर्स, ग्रेटर असमीज सोसाइटी, आई एम टेलिंग नॉट द असमीज स्पीकिंग ओनली, ग्रेटर असमीज society includes Bengali, Hindu Bengalis, indigenous Muslims, मारवाड़ी, भोजपुरी, सिख, गुरखा, सब कोई हमें आदिवासी एक साथ मिलकर इस घुसपैठी के खिलाफ हमें कार्य जवाब देना। धन्यवाद। Inspiring and encouraging speech. May I request now Subhadar Sultani to give briefly keynote address before we, because Niti has something for the continue. Friends, I'll just cut the introduction short for his contribution in Jammu and Kashmir. I think Shyama Prasad Mukherjee, one of the enduring contributions of Shyama Prasad Mukherjee, which we in Eastern India know him, is that he prevented Assam and Bengal in its totality from becoming a part of East Pakistan. And I think that's why I find it a little ironic. The first time I recall attending a meeting on this issue was in 1978, when I think Mr. Shashavan and Chanwal will recall that famous by-election. The by-election which the Mangalzai constituency, when the issue came up in the public as a precursor to the Assam movement. Since then, we've had General Sinha writing, we've had T.V. Rajeshwar writing, we've had various people, periodic census reports come up, and we had the IMDT
which I think detected about 200 foreigners, 200 Bangladeshis. We have the census, British society and Bodo society. And I'm very glad that Chawla and Shabral talked about the need for bringing the whole together. Society together, Indians versus the rest. The fight of the Bodos has been seen to be a fight of the Bodos alone. That sense of isolation which cynical politicians have preyed on. They have attempted to create divisions, Bengali. Yes, it is very important to make it inhospitable for future infiltration, future immigration. You can create barbed wire, you can create a line of defense, you can all that, the fencing on the border, all that is there. But what about those who are already in, who have now acquired independent clout, which enables them not only to challenge the borders, but enables them to also challenge the Congress, and not really in Assam, but threaten them all India. That is the question, I think, which we really have to address. I don't have any simple answers, but I think that is something which we must seriously ponder over. And I think not least in Kokrajhar, but I think people in Guwahati must also think about this far more seriously than they have done so as of now. Thank you very much. Thank you, Sir. देखिए, ये जब तक माना नहीं जाएगा कि लड़ाई हिंदुस्तान की है, पूरा हिंदुस्तान दिल्ली से लेके हर जगह तक बोड़ो के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक हम देश बचा सकते हैं न बोड़ो बचा सकते हैं। अभी कंपा जी ने कहा चिंता मत कीजिए, हम वॉरियर हैं, हम उनसे लड़ेंगे और उनको हरा के आपको दिखा देंगे। थैंक यू कंपा जी। मुत्यारी जी संक्षेप में कुछ बात कहेंगे, उससे पहले मैं माननीय मुत्यारी जी लोकसभा के माननीय सदस्य, बोडो समाज के बहुत महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेता हैं और बोडो संघर्ष में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनका कृपया स्वागत कीजिए। अति आदरणीय भूतपूर्व असम और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल लेफ्टिनेंट एस.के. सिन्हा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे बुदलैंड से आए हुए मेरा संग्रामी साथीगण, मेरा गहरा दोस्त असम से आए हुए सर्वानंद सोनोवाल जी, और आज की इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मेरे दोस्तगण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी और विभिन्न आदरणीय अतिथिगण, मेरे सांसद साथीगण, अति आदरणीय और सम्मानीय समवेत राइज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मनुष्य का क्या बात थी, हिंदुस्तान के मूल निवासी बोडो लोगों का जो दुख वेदना किस ढंग से आप सभी लोगों की सम्मुख में बता पाऊं। मैं बहुत तकलीफ करके शब्दों भाषा ढूंढने के बावजूद भी सही शब्द सही भाषा भी ढूंढ नहीं पाया। जो घटना हुआ, जो हो रहा है, उसके बारे में विभिन्न हमारे प्रवक्ताओं ने वक्ताओं ने आप सभी लोगों को जानकारी दी। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कुछ दरखास्त करना चाहता हूं आप सभी लोगों के सम्मुख में। अगर हम सही मतलब सही अर्थ में हम भारतीय नागरिक हैं, अगर हमारा जो देश है, जो हिंदुस्तान जिसको बोला जाता है इंडिया और भारतवर्ष, वो सही ढंग से असली मतलब में अगर हमारा देश
स्वराज है। स्वराज हिंदुस्तान देश के गर्भ में आज भारतीय लोगों को जो तकलीफ उठाना पड़ रही, जो विदेशी लोगों की तरफ से बाहर जो आक्रमण हो रहा है, इस सिलसिले में, इस परिस्थिति में क्या करना है, ये बहुत गंभीर मामला एक देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो गया। इट इज बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फॉर द होल नेशन। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिजिनस बोडो ट्राइबल पीपल ऑफ आइदर असम और ऑफ द बोडोलैंड एरिया। ये हमारे देश के लिए बहुत भयंकर एक विपत्ति है। इसको कैसा हम सामना करें, दिस इज द वाइटल क्वेश्चन। हमारे देश में असम से लेकर के सभी हिंदुस्तान में कितने लाख बांग्लादेशी लोग घुस गए, उसका हिसाब किताब सभी लोगों के पास जाहिर है। और इसका जो इसके बारे में जो रिसर्च किया, सबसे ज्यादा रिसर्च किया हमारा असम के पूर्व गवर्नर मिस्टर एस.के. सिन्हा साहब ने। इतना अध्ययन किया, इतना तकलीफ किया। 1998 में उसी समय का भारत का राष्ट्रपति के नारायण के पास उन्होंने एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाकर पेश किया। He had submitted a very excellent kind of report and recommendation suggesting the government of India what to do, what not to do to defend the nation in their part of the country. But 98 के बाद आज तो कितना साल बीत गया, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाया। हमारे दोस्त सोनल साहब जी ने IMDT 1 के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2005 साल में IMDT 1 को नकार कर दिया। Now, our India, in what way want to retrace or address this very crucial and very challenging issue of the migration, unsafe migration of the Bangladeshis into India? There are few measures. Whether our India is having any kind of Citizenship Act, law, what the Citizenship Law of 1946 says about the Bangladeshis, or any illegal infiltration, what the Citizenship Act of 1940 says, talks about the illegal migration either from any country, and what does say the 1964 Foreigners Tribunal Act. हमारे देश में इतना कानून है, कानून के कोई अभाव नहीं है, लेकिन अभाव है दिल दिमाग की ऑनेस्टी का अभाव है। अगर कानून ही नहीं है और हमारा देश अगर सर्वभौम नहीं है तो बेटा सरेंडर करो, सरेंडर करो। तो कानून होने के बावजूद भी इतना लाखों आर्मी है, इतना लाखों सेंट्रल फोर्सेस है, फॉरेन फोर्सेस है, इतना लाखों करोड़ पुलिस है, 130 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में, क्या नहीं है? फिर भी आज किसी के पांव के पास जिक्र हो। What is the weakness on the part of Indian people, Indian society as a whole? बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं बोलना चाहता हूं। देश में जो कानून है, ये कानून को लागू करना है, देश को बचाना है, एकत्र होना है। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए, हमारा आसाम में रहने वाले जितना ट्राइबल लोग हैं, उनकी जमीन जायदाद की हालत क्या मैं बताना चाहता हूं। आज तो हमारे आसाम में
45 numbers of tribal belts and blocks were created right from 1948 under the Chapter 10 of the Assam Land Revenue Manual 1886, amended in 1947. And out of these 45 numbers of tribal belts and blocks which were restricted for other outsiders, some tribal belts and blocks have already been again dismantled. Say for example, Goa tribal belt and block. In 1982, on 10 December, the then government of Assam had circulated one memo to all the district collectors and civil subdivision officials, directing them to remove all the illegal occupants from the tribal belts and blocks. लेकिन आज तो कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया. उसके बदले क्या हुआ? ज्यादा संख्या के लोग, several tens of thousands and lakhs doubtful Bangladeshi immigrants घुस गया. In view of this, what happened? All these tribal belts and blocks are now on the verge of being extinct. खत्म होने जा रहा है. now ट्राइबल कहा जाएगा. इसीलिए तो हमारे असम के बोडो लोगों को Bodoland, Olivras, Manker. Then subsequently the government of India have told us, don't ask for separate state. You take autonomous area. In 1993, we signed the first Bodo Accord. I was the then president of the All Bodo Students Union. I was the first chief of the erstwhile Autonomous Council. But none of the provisions of that first Bodo Accord was implemented, either by the government of India or by the government of Assam. Then I quit the council after 5 months. When militancy grew up, then BLT came into being. बहुत धराशायी लड़ाई हुआ, बातचीत हुआ, 2003 से नया समझौता हुआ और आज की बोडो इंटरनेशनल काउंसिल बन पाया. और आज इतनी कुर्बानी के बाद भारत सरकार ने हमको जो छोटा सा टेरिटोरियल काउंसिल दी था, उसको भी बंद करके सारे बांग्लादेश दुनिया के सारे लोगों को हमारे बोडोलैंड होकर आसाम में घुसा देने की भी कोशिश कर रहा है. इसलिए आज हालत ऐसा हो गया. इसलिए मैं मांग करता हूं, जो तो हमारे बोडोलैंड एरिया एक अलग राज्य के रूप में गठित नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे आज के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को पुलिस प्रशासन, पुलिस को कंट्रोल करने की जो क्षमता, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जो क्षमता, जो पावर, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने की जो क्षमता, उसको भारत सरकार हमारे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के हाथ पर सौंपा देना चाहिए. अदरवाइज time has come to get again re-balkanize the present state of Assam. असम को re-balkanize होना ही पड़ेगा. Re-balkanizing Assam is a must. इसलिए मैं ज्यादा लंबा बात नहीं करना चाहता हूं. आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमको बचाए, बोडो लोगों को बचाए, बोडोलैंड को बचाए, आसाम को बचाए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम सभी इकट्ठा होना होगा. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद बतारी जी. मैं हम सब जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बोडो समस्या को इतना महत्व दिया है कि आज की परिस्थिति आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, एनडीए की बैठक है, कल सदन का वे अपने उद्बोधन देंगे. मित्रों, जोरदार तालियों से माननीय आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण,
और उपस्थित भाई और बहनों, विशेष रूप से जो गंभीर घटनाएं हुई है उसका विस्तृत वर्णन वक्ताओं ने आपके सामने किया है। एक बात मेरे लिए समझ में नहीं आती कि इतनी गंभीर घटना होने के बाद में इतने लोगों की हत्या हुई, इतने लोगों को घर से बाहर वहां से हकारा गया, आज लोग बेघर हो गए, इतनी बड़ी घटना हुई, उस समय हमारे स्टेट का और सेंट्रल का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, ये मेरे समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री कह रहे कि मिलिट्री के लिए हमको समय लगा, समय पर अगर मिलिट्री जाती और सरकार अगर कार्रवाई करती तो शायद अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती थी, अनेक बेघर लोगों को बचाया जा सकता था। पर दुर्भाग्यवश किस प्रकार से निर्णय हो रहे, किस प्रकार से सरकार चल रही है। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे कि केंद्र सरकार और यहां की हमारी मिलिट्री मिलने में हमको देरी लगी। इधर अभी सोनलाल जी कह रहे कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं उनको हमारे गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है कि विदेशी घुसकर अंदर आएंगे, उनके ऊपर प्लास्टिक की बुलेट मारो। ये सब बातें क्यों हो रही है, इसके लिए सही में इस समस्या के मूल में जाना बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि ये जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये समस्या हिंदू और मुस्लिम समस्या ऐसी समस्या नहीं है। ये समस्या है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसके खिलाफ जो विदेशी घुसखोर है उनके बीच में की ये समस्या है। और विशेष रूप से 1947 के बाद और आज तक का इतिहास जो है, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो विदेशी घुसखोर है उनके साथ वोट बैंक राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी की साठगांठ है और इसी समस्या का ये सबसे बड़ा कारण है। मैं 4-5 बार इस्राइल में जाकर आया हूं और जब जब भी जाता हूं तो मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ लीबिया है, एक तरफ पैलेस्टाइन है और लगभग हम लोग हाईवे से दूसरे देश में देख सकते हैं, वहां लाइट लगे हुए रहते, लोगों को देखते हैं। उन्होंने जो बॉर्डर फेंसिंग किया है उसमें से कोई अंदर नहीं आ सकता। जो सुरक्षा के बारे में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसकी जो फेंसिंग जो की हुई सिस्टम है वो आसानी से बनाई जा सकती है। 270 किलोमीटर हमारी जो बॉर्डर का उल्लेख आपने किया है उसमें 50 किलोमीटर ओपन है और लोग घुस रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे भारतीय लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इनमें से लोगों ने कहा कि जो लोग बांग्लादेश से आए वो वेपन्स लेकर आए हैं और हमारे देश में हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिस सरकार की जिम्मेदारी है जनता का रक्षा करना, वो सरकार निरपराध और गरीब लोगों की रक्षा नहीं कर सकती। ये देश की स्थिति है। बहुत सी बातों पर बहुत डिटेल में चर्चा हुई। सिन्हा साहब उपस्थित है, उन्होंने भारत सरकार को जब वो गवर्नर थे दिया हुआ रिपोर्ट हमारे सामने उपलब्ध है। अनेक रिपोर्ट्स हैं। सबसे अच्छा है इंडियन एक्सप्रेस में हमारे जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने कही हुई बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि वो फिर से आप सबके लोगों के सामने दोहराने की आवश्यकता है। मैं भारत के चुनाव आयुक्त श्री एच.एस. ब्रह्मा द्वारा जो इंडियन एक्सप्रेस में 28 जुलाई को मैं लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनके जैसे व्यक्ति ने कहने के बाद भी सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, और सरकार अगर हिम्मत के साथ स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के साथ अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो आसाम की जनता को जो इंडियन ओरिजिन की है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, सबको समझना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर ये कारण आप ठीक प्रकार से अगर नहीं समझ सकोगे तो ये प्रश्न कभी सुलझाया नहीं जा सकता। और इसलिए आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ है। आज एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में निर्णय किया गया कि कल पार्लियामेंट हम चलने नहीं देंगे।
अडवाणी जी ने अर्जेंट मोशन डाली है लोकसभा में कि प्रश्नोत्तर तास स्थगित करके इस पर चर्चा करो, और राज्यसभा में अरुण जी ने भी डाली हुई है, यहां बहुत से सांसद बैठे हैं, और निश्चित रूप से आपका आवाज कल हिंदुस्तान की संसद में निश्चित रूप से बुलंद किया जाएगा। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी हमारा एक देश, हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास, हमारी विरासत, ये सभी बातें जो है इसकी रक्षा करना हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी विचारों के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। और इसलिए मैं पहली बात आपको एहसास देना चाहता हूं, अकेले नहीं है, यह राष्ट्रीय गंभीर समस्या है, और इसलिए केवल मैं इसको राजनीतिक सवाल बनाना नहीं चाहते, ये राष्ट्रीय प्रश्न है। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करना चाहूंगा कि इसको वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर ना देखें, इसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखें, देश की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ जोड़े। विदेशी घुसखोर जो है वो विदेशी ओरिजिन के हैं और हमारे देश में आकर इस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं, और हम चुपचाप बैठे हैं। दुनिया में किसी भी देश में ये नहीं हो सकता, ये हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है, इसके लिए हमको निश्चित रूप से इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। जो ब्रह्मा साहब ने का लिखा है, और मुझे लगता है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई राजनीतिक नेता कहता तो लोग कहते कि ये पॉलिटिकलाइज स्टेटमेंट है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब ने उस समय हमको बताया, उनका उस समय अगर सुना जाता तो आज यह घटना कभी नहीं होती। 1960 में जब कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री चालीसा जी थे, उन्होंने मंजूर किया था, उसको अगर मंजूर किया जाता, जो विश्व समय मुस्लिम एमएलए ने कहा कि ये मंजूर होगा तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे, तो वो पीछे हट गए, वो नहीं हो पाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं होने दिया। 1957 में लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार आए, तब उन्होंने घुसखोरों का विषय उठाया था, तब देश में नहीं सुना, इसलिए आज हमें परिणाम भुगत रहे हैं। 1984, 1980 ऐसे एक में अनेक इंसिडेंट है। और ये बात जो सोनिया जी ने कही है वो सच है कि आज जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के विविध धर्म का पालन करने वाले लोग जो है, जो हिंदुस्तानी है, उनको इस समस्या का मूल कारण समझना होगा। और इसलिए जो कम से कम चुनाव आयुक्त जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो कम से कम मुझे लगता है कि हम सबको, देश को जगाने वाली बात है। निचले असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त जिलों बीटीएबी में हिंदू, बोडो और मुस्लिम अप्रवासियों क्यों लगा? ये कोई राजनीतिक नेता सवाल नहीं पूछ रहा, हमारे चुनाव आयुक्त है जैसे व्यक्ति ये सवाल पूछ रहे हैं। आसान विस्फोटक स्थिति, इंटरनल एक्सटर्नल सुरक्षा, उसकी रक्षा होगी या नहीं होगी? मेरे समझ में नहीं आता कि आज जिस प्रकार की मजाक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब बैठे, क्या हम इतने भी काबिल नहीं है कि घुसखोरों को रोक नहीं सकते? क्योंकि यहां इस लड़ाई में जो स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए वो दिल्ली में शासन करने वाले राजनीतिक नेताओं की नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए बाहर से आए हुए लोग लगातार हमको सत्ता में आने के लिए मदद कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए मदद कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का रवैया जो है वो घुसपैठियों के बारे में साफ नहीं है। और इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातों का यहां आया है। विशेष रूप से मैं देश की जनता को अपील करूंगा कि ये हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है, ये इंडियन ओरिजिन के हमारे भारतीय नागरिक और उनके खिलाफ विदेशी घुसपैठियों के बीच की समस्या है। जो राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में जो बार बार बात होती है, मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसे कानून बनाते कि हम लोग इन्फिल्ट्रेटर्स को नागरिक कैसे बनाए। झूठे कागज लाकर वो होटल सिस्टम में भी घुस रहे हैं और चुनाव के लिस्ट में उनके नाम आ रहे हैं। हम बाहर नहीं निकाल सकते, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, हमारी सीमाएं सील नहीं कर सकते, हमारी मिलिट्री, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कुछ नहीं कर रहा। आए हुए लोग अंदर घुस रहे, प्रॉपर्टी खरीद रहे।
और मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय समस्या के पीछे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये केवल आसाम की समस्या नहीं है, ये केवल हमारे बोडो के जो हमारे भाई बहने हैं उनकी समस्या नहीं है, वो देश के नागरिक हैं। उनके देश के साथ, हमारे हिंदुस्तान के साथ कटिबद्धता है, इस भूमि के साथ उनका नाता है। वो कुर्बानी देकर वहां खड़े, एक वाल के रूप में खड़े, देश की रक्षा कर रहे हैं। और उनको इस प्रकार की जो हालत पैदा हुई है, ये मुझे लगता है कि इस समय देश में दिखा देना चाहिए कि वो अकेले नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, जात, पंथ, धर्म, भाषा, पूरे भारतीय पूरे ताकत के साथ उनके पीछे खड़े हैं, ये हमको दिखाना चाहिए। मैं देश से अपील करूंगा कि इसमें हम सब लोग उनके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। बलबीरपुर जी ने मुझे कहा है, अच्छा सुझाव दिया है। कल आज भी मेरी चंद्रशेखर जी से बात हुई और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां आवश्यक साहित्य और सुविधा पहुंचाने की। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि टारपोलिन हो, कपड़े हो, कुछ अनाज हो, कुछ मेडिसिन हो, जीवन आवश्यक ऐसे इसेंशियल वस्तुओं की वहां बहुत आवश्यकता है। लोग बेघर हुए, लाखों लोग बेघर हुए हैं, दवाई नहीं है, रहने के लिए घर जो जल गए हैं। और ऐसे समय सरकार ने मदद करनी चाहिए। और विशेष रूप से जिस बात का जिक्र स्वपन गुप्ता जी ने किया, मैंने सब पॉइंट लिखे हैं। मैं बलबीर जी को और तरुण विजय जी से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इनके साथ थोड़ा 1 घंटा बैठिए, ये सब मुद्दों की नोट निकालिए और कल सुबह पार्लियामेंट के पहले ही, सुबह 2-3 घंटे पहले, ये जो मांगे हम कल पार्लियामेंट में करने वाले हैं, अडवाणी जी इसकी शुरुआत करने वाले हैं, इसके बारे में पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, इनकी मुलाकात भी करके दीजिए। कल हम जंतर मंतर भी करीब 10,000 लोग बैठने वाले दिन भर। आप वो आमंत्रित करता हूं, आकर वहां आपका दुख दर्द जरूर सबको बताइए, जो देश के लोगों तक पहुंचेगा। ये राजनीतिक सवाल नहीं है, राष्ट्र के सुरक्षा के दृष्टि से जुड़ा हुआ सवाल है। और मैं एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते भी मैं आपको आह्वान करता हूं कि मेरी पार्टी इसको राजनीति से ऊपर राष्ट्र के हित में सोचना चाहती है, देखना चाहती है। और इसलिए इसको केवल राजनीतिकरण इस सवाल का है, ऐसा मुझे नहीं लगता। कल एनडीए इसके लिए आवाज उठा रही है, मैं बाकी भी पार्टियों से आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री से विशेष रूप से अपील करूंगा, क्योंकि आसाम के बारे में बहुत बार उन्हें भी आश्वासन दिए। राजीव गांधी जी ने लाल किले पर सोनिया जी ने कहा, इस प्रकार का आश्वासन दिया, नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो मजबूरी है, वो सच हमारे राजनीतिक नेताओं के मुंह से निकल नहीं रहा, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। और इसलिए मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साठगांठ है। उन्होंने उसको तोड़ना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आसाम के हमारे भाई बहनों को, इंडियन ओरिजिन के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बोडो हो, किसी भी जात को, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उनकी जान की, उनके माल की सभी सुरक्षा करना हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार यह फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट की संविधानिक जिम्मेदारी है। अगर उसका वो वहन नहीं करे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है पिंकी आनंद जी उपस्थित है, ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी जाना चाहिए। मैं बीच में आसाम में इनको मैंने भेजा था और इस विषय को ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी लेकर जाना चाहिए। इस देश में हमारे लोगों के साथ अगर ऐसा सोतेला बर्ताव व्यवहार होता रहेगा तो ये भी ह्यूमन राइट का वायलेशन है। और इसलिए मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस विषय को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। जितने राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ आएगी उनको साथ में जोड़ेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी आह्वान करता हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। बांग्लादेश के साथ ये जो बॉर्डर है ये तुरंत सील होनी चाहिए और जो विदेशी आज हमारे यहां घुसपैठी है उनको देश के बाहर निकालना चाहिए। ये राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में स्वीकारा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, हमारी पार्टी लगातार इस विषय को उठाती रही है और आगे भी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस विषय को हम उठाएंगे। ये वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं।
आपको ये विश्वास देना चाहता हूं कि इस गंभीर समस्या में आप अकेले नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो अलग अलग धर्म की हो, पंथ की हो, संप्रदाय की हो, जात की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो इंडियन ओरिजिन के भारतीय सभी नागरिक आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और आपका आवाज संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह पूरी ताकत के साथ हम लोग निश्चित रूप से बुलंद करेंगे। ये विश्वास मैं आपको सबको देना चाहता हूं और मैं सरकार से अपील करता हूं कि कल पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर रोककर दोनों सदनों में तो कोशिश हो रही है। शायद मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या की सभापति अनुमति देंगे, आप भी उसमें बोलेंगे और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री इसका जवाब देते हुए निश्चित रूप से हमारे देश में जनता पर जो अन्याय या आसाम में हमारे नागरिकों के ऊपर, उसके ऊपर निश्चित रूप से कुछ समाधान देंगे और इस राष्ट्रीय प्रश्न को, गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए जरूर कोई कदम उठाएंगे और अगर कोई कदम उठाएंगे तो हम विपक्ष में होने के बाद भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। ये भी विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं। मैं तरुण विजय जी को धन्यवाद दूंगा। स्वपन दास गुप्ता जी ने सही कहा है, हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर के लिए हुआ, ये हम सबको तो बिल्कुल मुखोद्गत है, पर उसके साथ साथ बंगाल और आसाम को बचाने में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रवादी नेता थे, देश की अस्मिता के साथ उनकी कटिबद्धता थी, वो एक स्ट्रांग नेशनलिस्ट थे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है और इसलिए उनके ट्रस्ट के द्वारा एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवादी गंभीर संकट के ऊपर आपने इस समय ये जो कार्यक्रम किया और देश की जनता को जनता के पास पहुंचाने के लिए जो उपक्रम आज का किया है, मैं आपको और सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। नमस्कार। मैं आदरणीय सिन्हा साहब से प्रार्थना करूंगा कि अध्यक्षीय उद्बोधन दें। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हिम अ बिग क्लैप। एक केवल छोटी सी बात, मैं आप सबको अपील करता हूं, कल से हम लोग जो हमारे भाई बहने ईसाई हुए, मुझे बलवीर जी ने कहा कि पार्लियामेंट की ओर से हमारे सबको 1 महीने का वेतन उनके लिए वेलफेयर की जो योजना हम कर रहे हैं उसके लिए वो सब देंगे। मैं आज सुषमा जी और रोजी से बात करूंगा, कल वो भी हमारे कार्यक्रम में देंगे। दूसरा, जनता से मैं अपील करूंगा आपके मार्फत कि मेडिसिन हो, बाकी सब बातें हम कल समिति घोषित करेंगे। तरुण जी भी इसमें इनिशिएटिव ले, परिस्थिति अडवाणी जी भी देख कर आए, तरुण जी भी बताए, ये सब लोग बहुत गंभीर है, कपड़े नहीं है, घर जल गए हैं, लोग एक समय के अनाज के लिए मोहताज है और ऐसे समय मैं हमारे बाकी भी मुख्यमंत्रियों से मैंने आज चर्चा की है, हम लोग अनाज से लेकर सब बातें वहां भेजने का प्रयास कर रहे हैं आपके द्वारा। और हिंदुस्तान की जनता को मैं अपील करूंगा कि कल जो समिति होगी उसमें आप जो सहयोग कर सकते जरूर करिए, ये मेरा आप सब सहयोग है। श्री गडकरी जी, श्री बसारी, श्री सोनोवाल, other distinguished leaders on the platform, on the dais, ladies and gentlemen. I do not know where to begin and how to put across all my views in as short a time as possible. Both are major challenges for me. To begin with, let me tell you that my association with Kokrajhar started in 1944, when many of you in this hall were not born. I did my general training as a young officer before going to Burma during the Second World War. And later, during the language arts, and soon after, I was commanding the division in Brahmaputra Valley, and I saw things on the ground.
And subsequently, as governor of Assam for 6 years, 1997 to 2003, I was intimately associated with the problem of that state. Let me give you a little historical background. The problem of Assam starts from 1904 or 5, when the All India Muslim League was formed in Dhaka and demanded a Bangla Islam. This was much before the demand for Pakistan came up. And Bangla Islam to comprise Bengal and Assam as a Muslim state, an independent state. And later, in 1931, a British ICS officer, Muller, who was the census superintendent of Assam, expressed his strong views in the census report, saying that if measures are not taken, the Assamese people would be confined only to Upper Assam of Tezpur and Sibsagar area. They would become foreigners in their own land. And that was when India was one country and the movement was taking place from Memon Singh, then part of North Bengal. And then in 1947, Moinu Haq Chaudhary, Private Secretary of Muhammad Ali Jinnah, said that I am going to offer Assam on a platter to Pakistan. And Jinnah and Guwahati said that Assam is in my pocket now. And a little earlier, during the Muslim League ministry of Saidullah, he was then the Prime Minister of Assam, as is known, he was encouraging people from Memon Singh area, Muslims, to come into Assam to change the demographic profile. And the Viceroy, Lord Vero, he said in his book, Viceroy Journal, that the Prime Minister of Assam is not trying to grow more food, but trying to grow more Muslims. So that is the background. And when the grouping plan came, in 1946, Assam was put in Group C. And initially the Congress and the Muslim League both accepted it. Had it not been for Baudulai, Gopinath Baudulai, taking up cudgels and Mahatma Gandhi backing him up, you would have had Assam as part of East Pakistan. And even after independence, Zulfikar Ali Bhutto, in his book, Myths of Independence, writes that Kashmir is not the only problem. Certain districts of Assam are an equally important problem to be resolved between India and Pakistan. And even a friend of India, Sheikh Mujibur Rahman, before he became the president of Bangladesh, had written a book called East Pakistan, Economic and Political Considerations. And in that book he said that East Pakistan needs a living space in Assam. Libansuram is the word that he used. So that is a long history. And then the Congress started using the Muslim vote bank in Assam. Unfortunately, there were three people, Assamese politicians in Delhi at that time. Moinu Haq Chaudhary,
erstwhile private secretary to Jinnah, was now a cabinet minister in Delhi. Fakhruddin Ali Ahmad was another cabinet minister. And the third person, president of the Congress party, Devkan Balwa, of India's Indra and Indra's India fame, he said that so long as we have Alis and Kulis with us, Congress will always be in power in his hand. Alis being the illegal migrants. So it's a deliberate policy to build a vote bank. Mr. Sonowal, in his very impassioned speech, he mentioned that we have created problems for us ourselves after 1971. True. Actually, the problem was continuing from before, but got further aggravated after 1971. And in a light-hearted way, I want to mention something. General Niazi, the Commander-in-Chief of Pakistan Army in East Pakistan, who surrendered to us, he and I had served together as captains during the Second World War in Indonesia and Burma. I knew him. After the 71 war, I was looking after all the 90,000 prisoners of war. And I went to Jabalpur. There was Niazi. We met, we recognized each other. I had not met him from those days. And in the evening we had a drink together. He said one sentence which Mr. Sonowal may like to hear. He told me, these so-and-so stabbed us in the back. Mark my words, they will stab you in the back too. And that is exactly what has happened. Now, the problem. We have all known what the problem is, but we don't want to do anything. It's a self-created problem. I do not blame the Bangladeshis. I blame ourselves. We have created the problem, not the Bangladeshis. We have encouraged it. And there cannot be a greater condemnation of the Congress party than one from their family, a cousin of Jawaharlal Nehru, B.K. Nehru, who was the governor of Assam, and a Congress chief minister, Chalia. They both wanted to take effective action to prevent these people coming. They were already coming in large numbers. And they were told by the Congress party in the center, by Indira Gandhi and these three Assamese leaders who were in Delhi at that time, Darua, Fakhruddin Ali Ahmad and Mohimullah Chaudhry, don't take any action. Let them come. And in his autobiography, B.K. Nehru writes, I have known the old Congress, and Chalia belonged to that old Congress, which gave priority to national interests. Today's Congress gives priority to party interests. Now that was in the 70s. When I took over as governor of Assam, before that, I met the army commander in Calcutta. The army commander had served under me when I was in the army. I had known him well. A Muslim officer, Lieutenant General Jamil Mahmood. He later died in a helicopter crash. He has written, and he also told me, that he mentioned to Hitesh Saikia, the Chief Minister of Assam, and Jyoti Basu,
Chief Minister of Bengal, this is a grave danger. If you don't do something about it, the infiltration, you will have to redraw the boundaries of India. Means the whole of northeast landmass will get lost. Not only that, in a written report of 1990, he said that if we are not careful, a Kashmir-like situation is going to develop in Lower Assam. And this is exactly what has happened. The only saving grace today is Sheikh Hasina, when she has got a thumping majority there, is friendly towards India. But imagine if this sort of thing is allowed to continue and you have an unfriendly government in Dhaka, what would be the situation today? Now, a lot of people have made certain suggestions. I don't want to go into too many details. But let me tell you, it took me 8 or 9 months on taking over as governor to compile that report. Prior to that, I toured every inch of Assam-Bangladesh border. In the speedboats of the BSF in the Brahmaputra and on bumpy roads all along. I saw the population on the border. I had known Assam for 50 years earlier. I felt, looking at the dress and the people, that this was not Assam. You have a whole lot of people of Bangladesh origin in lungis going around there. Anyone going to the border can see. I carried out research and I interacted with many people in Guwahati, the intelligentsia, political leaders, academics and so on. And then I wrote that report. Our report went to the President. The Assam press, in all the languages, serialized that report, 42-page printed report, the newspapers. And it will surprise you to know that 22 Congress MPs from the Northeast appealed to the President to recall me from Assam because I was taking part in politics. And of course my answer was, it's the governor's right to send monthly reports to the President, and it's a burning issue. If as governor I don't write a report on this subject and rise the President, I'll be failing in my duty. But there it is. There were 15 specific recommendations, and not one of them was acted upon. And if that had been acted upon, the present situation would not have arisen. I don't want to go into all the details, but let me give you 2 or 3 examples. People have been talking about the barbed wire fencing. As Army Commander in the Western Theatre, we have put up barbed wire fencing in Punjab right up to Rajasthan, and that was completed in less than 2 years. High quality barbed wire, electrified towers, searchlights and everything. As Governor in Jammu and Kashmir,
we put up 700-kilometer long barbed wire, electrified, in a year and a half. And in the most difficult terrain on those mountains, where everything had to be lugged, either on a mule or by porters. We could do it in a year and a half. Here you say that they put up a barbed wire, Assam Accord in 1985, and in 1992 the work commences. And in 1997 when I toured, it was incomplete, low quality. Even anti-rust mixture was not applied to the barbed wire. And it rains heavily in Assam. I'm told even to this day, it is not fully complete. As regards the National Register of Citizens, Assam had it in the 50s and 60s. No one bothered to update it. No identity cards were issued to people in the border districts. I said, do it for the whole of Assam. And now there's some idea of issuing biometric cards, UID. And these people will get it. There will be a ticket to citizenship in India for these people. Just as political parties are going to give them ration cards and they display that and they become citizens. So, the Chief Election Commissioner, Mr. Sikdar, in 1979, he said at a meeting of all the Chief Election Commissioners in Uttarakhand that if action is not taken, there are so many illegal migrants who are not citizens of India, whose names are in the voters list, the Assamese will be a minority in their own country in under 20 years. And the reference made to Mangalgai constituency, 70,000 Bangladeshi names were on that voters list. That is part of the movement. So we just don't want to do anything about it. And now what has happened? If you read the media, you get the impression that it is an ethnic clash, but what is more, both sides have been victims of this clash. Bodos have attacked the immigrants, and immigrants have also attacked the Bodos, when facts are entirely different. You have heard that being narrated from this platform. Now, what is the answer? Firstly, collapse of governance has taken place. You have to anticipate rather than wait for things to happen. A vigilant government should not have allowed this situation to deteriorate like that. And when it erupts, look at the blame game. A chief minister says that government of India did not give us intelligence. I mean, the person who should be giving intelligence to government of India is the state government. There will be people on the spot. And then complains that central forces took long time to come. Army is being blamed. We asked for army help on the 20th, the army help came on the 25th. And the fact is that the defense ministry sat on it until 24th evening did not get clearance for the army to be deployed. I mean, this is total collapse of governance, leap on everything else. Now the other aspect is what exactly can be done. I am afraid
even in 1998 I had written this and I would like to repeat. To deport over 1 crore people to Bangladesh today is impracticable, just not possible. Unless you go to war with Bangladesh. Bangladesh says, no, they are not our citizens, we will not take them. So what are you going to do? Use force? Even Sheikh Hasina, who is so friendly, she has said that there are no illegal Bangladeshi immigrants in India. I had said that in 1998 also. My solution is that declare them stateless citizens. They have no right to acquire immovable property and they have no right to vote in any elections. If you do that and implement it, the whole problem gets resolved. I had even suggested that as in 1983 election, you got magistrates and people from outside Assam to conduct the election. Get magistrates from all over India. Form a team, 10 or 20 in every district. Go down to every village. With the help of the old National Citizens Register and local investigation, establish who is an illegal migrant. Not difficult to do. And having done that, say, sorry, you will not be given voting rights or land right to acquire property. You can stay here. Now, this is not something which has not been done, and done in the wrong way. I do not know if you are aware, but in 1947, 30,000 Hindus and Sikhs from West Pakistan came to Jammu. And their strength today is over 1 lakh. Today they are stateless citizens. They have no right to vote in elections. They cannot acquire property in Kashmir. Their children cannot go to technical educational institutions like medical colleges and engineering colleges, and they cannot be recruited in state government service. And this is in our own country. When they have every moral right to be full citizenship in that state. After all, the millions who came at the same time, they were immediately given citizenship rights, and 2 of them became prime ministers, Indira Gujral and Manmohan Singh. Another became a deputy prime minister, Advani. They are all refugees of people who came from Pakistan. So, what is so great about it? Why can't we do it? And as I say, if we have the will, we can do it. But unfortunately, we have shown a total lack of political will. I think I have spoken long enough and shared my views with you. Thank you very much. May I request Dr. Harshvardhan ji to give a vote of thanks, and meanwhile if we can request our all workers, Abhishek, Anu Sharma, Shyam Sundar ji, Nanwal ji, Shamlal ji, Rana ji, to come here because they have done this miracle to organize this event. Amardeep. It's only 2 more minutes, don't worry. Well, we all came with an extreme concern for our friends in Assam, and I think we are going back with a heavy heart and a firm resolve
to fight for them with more vigor, sincerity, determination, and of course everything that we all have. While I was part of all these deliberations, I was reminded of a function which I attended exactly 30 years ago. I was a postgraduate student in a medical college in Kanpur, and a function was organized in Lajpat Bhavan, which was attended by something like 2,000 people. And the chief speaker at that function was our senior RSS leader, Mr. K.S. Sudarshan. He was not the Sangh-Chalak of RSS at that time, and that was our first interaction with that great man. He spoke for almost 3 hours, and whatever I heard during the course of these deliberations today here, all this was anticipated and apprehended by him at that time, long back, 30 years back. Exactly the same things that we are seeing today. All these districts which have become Muslim dominated districts, he predicted all that in 1982. And everyone who came out of that program, he said, is a great intellectual. That was the general comment. And I think after listening to all of you, all these fellows who will go out of this auditorium, they will also say that all of them are great patriots, great intellectuals, and great motivators. Sir, we are extremely thankful to you, Lieutenant General Sinha. He has been guiding us in the activities of Dr. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation all through. He has gone with us up to Calcutta. He has spoken on Kashmir issues. He has today delivered such a brilliant lecture on the problem in Assam. And we feel extremely privileged to have your presence here. The keynote address from our dear friend Swapan Das Gupta ji has been extremely nourishing. We have always appreciated his writing, and whenever he writes something, we always say we love his writing, we respect his writings. And today also I think he has delivered one of the finest keynote addresses. We are extremely grateful to you, sir. In absentia, we thank our learned President also, who has been a great motivator and inspirer for us, we the workers in BJP. And he is a great visionary and a great leader who knows what has to be done in the larger national interest. And he doesn't wait for any specific time to deliver what has to be done for the country. And to all our respected senior leaders from Assam, Shri Kampaji, Vishwajit ji, Sarbanand ji, and Shri Vishwa Mukherjee ji, I have really no words in my vocabularies to express my gratitude to all of you for making it to this function. Because without your presence and without what you have said, we may have been actually deprived of the actual scene that is happening. And although Advani ji went there, Tarun ji went there, so many of our distinguished people have gone there, but this was an account which was delivered by you, which has really made us feel that we all have to work with more vigor for the Assamese problem. And the call that has been given by all of you, that India has to unite, Assam has to unite, we all are one and we will fight it out. I think we express our gratitude to all of you once again with our highest regards. And of course to the distinguished audience here, there we have a lot of MPs and very senior army people, lawyers, intellectuals, leaders, politicians, and our younger so many people, our senior RSS leaders. I don't have to name each one of them. And of course our media friends. I came here at 4:30, I saw all these media friends were here even at 4:30. That was their concern for this particular show. With these words, I once again express my gratitude to all of you
for making it a successful function, and we pray to God that whatever we have resolved today will see the light of the day, and this problem will be resolved once for all for a better India. Thank you, sir. Let's begin with Janata.